Okay. So hey guys, start. Done. So hey guys, welcome back. Yeah, sir, sure. So hey guys, welcome back to our channel hacksudo. So आज का गेस्ट लेक्चर बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के गेस्ट लेक्चर में हम हमारे नितिन पांडे सर जो हमारे नितिन पांडे सर गेस्ट लेक्चर लेने वाले हैं। उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन छोड़ के उन्होंने साइबर सिक्योरिटी में कौन से सक्सेस हासिल किए उनके बारे में आपको बताता। ओके, नितिन पांडे सर इज a community leader in DIPCON Lucknow. Okay, as well as he is a chair member of National Cyber Security Safety and Security Standards. Okay, he is also founder of National Information Security Council, and he is a founder of also Hackers Day. Okay, Hackers Day के बारे में सर लास्ट में कुछ इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे। Okay, also he is now currently working in a CEO of Cyber System Info Solutions Private Limited. ओके, सो आज का लेक्चर है साइबर सिक्योरिटी, करियर इन साइबर सिक्योरिटी के बारे में। सो इंट्रोडक्शन ज्यादा नहीं लेते, हम डायरेक्टली सर की तरफ बढ़ते हैं। सर नितिन पांडे सर। Yeah, thank you so much for inviting me to whole. Thanks to whole team of Hacks for Nitin Pandey. I'm going to talk about cybersecurity, and as he's already introduced me, so I don't think I should introduce myself. So, talking about cyberspace, so first of all, let me clear that I will be speaking in both languages. I mean, Hindi and English. So, talking about cyberspace, it's a very vast, very huge domain. You can say it's like an ocean. तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि जब भी मैं भी बहुत सारे मैसेजेस आई थिंक एवरी डे आई रिसीव मैसेजेस लाइक आई वांट टू स्टार्ट माय करियर आई वांट टू मेक माय करियर इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन so basically students who are who are just pursuing their bachelor degrees or they are in uh, 10th or 12th standard. So they are confused that from how and from where they can start their career, in cybersecurity domain. So that's a very obvious question. And because the cybersecurity domain is a huge, as I told you earlier, it's a very huge and very vast domain. So कहीं से भी आप मतलब जंप नहीं लगा सकते इसमें। बहुत लोग ट्राई करते हैं कि एक बार में सब कुछ सीख ले, तो वो काम नहीं करता है। तो उस स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना पड़ता है। तो सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम। यू नो in cybersecurity, if we talk about there are so many fields. If we talk about like web application security or BAPT, means vulnerability assessment and penetration testing. Digital forensics, there's a huge scope in digital forensics because बहुत कम लोग हैं इस डोमेन में आज अभी इस वक्त। तो हमारे इंडिया में इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। इसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी, मैलवेयर एनालिसिस, cryptography, social engineering, IoT security, mobile security, blockchain, exploitation, artificial intelligence. अभी रेड टीम वो टाइम गया, वो जनरेशन गई जो जब हम कहा करते थे white hat, black hat, and all these things. So अभी क्या है कि जो एडवांस्ड लेवल सिक्योरिटीज हैं उसमें रेड हैट टीम आता है, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग और पर्पल टीमिंग, ये चीजें आती हैं। So talking about web application, because I think almost more than 70%, whenever I communicate with any student or anybody, they always ask about bug bounty because they see people posting their bounties and all. तो ये बहुत तेजी से उनको अट्रैक्ट करता है, तो वो सोचते हैं कि हम बग बाउंटी में कैसे अपना करियर बनाए, या वो बिना सोचे समझे वो बग हंटिंग में कूद जाते हैं, जिससे कि उनको मिलता कुछ नहीं है और बाद में वो परेशान होकर फिर इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। So talking about web application security, so as
the names tells everything. Web application security means it is, it is complete, it is a branch of information security that only deals with, security of website, or we can say web applications, or web services. Like for example, we are right now we are using Zoom app, so we can consider it in web application security. So, I personally believe that the best way to learn web application security is OWASP Foundation. You can, because everything is open source there, you can learn everything in, if we talk about web application security, from OWASP.org. So, and also, let me tell you some, these are some methodologies. Like you can see OWASP, OWST, it means open source security testing methodology manual. So there are so many methodology. I personally follow OWASP guidelines because, I what I have seen that OWASP is, it's a perfect way to learn web application security. So I always believe that we should follow OWASP guidelines. सो एज यू कैन सी ओवास दे हर 4 साल में ये अपना टॉप 10 बग्स निकालते हैं, जैसे 2013 और 2017 की आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स। तो टॉप 10 में कौन कौन से बग्स आते हैं, वल्नरेबिलिटीज, आई मीन मोस्ट कॉमन बग्स। So as you can see, the first one is injection, second one broken authentication and session management, third one is cross-site scripting. Cross-site scripting बहुत ही कॉमन बग है, और ज्यादातर लोग जब बग बाउंटी भी करते हैं तो वो एक्सेस ही फाइंड आउट करने में लगे रहते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन आ गया, CSRF आ गया, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेटिंग। So if you talk about cross-site scripting, so there are two types of accesses. One is reflected and one is stored. So I'm not going into मैं डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि 1 घंटे में पूरा सेशन खत्म करना है, हमको कंप्लीट करना है। तो मैं एक ऐसे ऊपर से एक ओवरव्यू देता जाता हूँ चीजों का। So you can start, you can start practicing in DVWA or WebGoat. There are so many, where you can say them. Vulnerable labs are available. You can download them and you can install these vulnerable labs in your system, and you can practice whatever you learn. Just always try to practice. If we talk about DVWA, damn vulnerable web application, so it's, it's free and open source, and PHP MySQL web application that is damn vulnerable. Here you will, I think you will see the most common bugs. You can practice all of them here. So these are some steps which you need to follow if you want to pursue your career in web application security. Like, start reading. First of all, you have to understand the OWASP top 10 bugs, which bugs are most common in web application security. Like I have mentioned, SQL injection or cross-site scripting or CSRF. So after that, you can also download OWASP testing guide manual. So once you will download and start learning OWASP testing guide, so you will start understanding how to, how to find a bug. Always try to understand the concept behind a bug. तो उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि कैसे किसी बग को ट्रिगर करना है, कैसे किसी बग को खोजना है, because there is huge competition if we talk about bug bounty. So it's not easy nowadays to get a bug in any website, or because ये 10 सालों से बग बाउंटी सर्विसेज दे रहे हैं ये लोगों को, और हर रोज लाखों लोग इस पे हंटिंग करते रहते हैं, और वो जो भी उनको बग मिलते हैं रिपोर्ट करते रहते हैं। So it's not easy to to get a bug. Maybe you find a bug and आपको पता चला वो डुप्लीकेट है, तो उससे कभी डिसअपॉइंटेड मत होइए, सीखिए और भी ज्यादा क्या आप सीख सकते हैं। और
उसके बाद this is the most important part. If you are, you want to pursue your career in web application security, most of the people, they don't want to learn, web programming languages. So it is, very important to at least to know the basics of HTML, CSS, PHP, JavaScript, so that at least you can understand the source code. तो जैसे कि अगर मुझको फॉर एग्जांपल मुझको कोई मुझे चाइनीज या रशियन लैंग्वेज में कुछ लिखा है, उसको अगर मुझको पढ़ना है, तो मुझे जाहिर सी बात है वो रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तभी मैं उसको पढ़ पाऊंगा। नहीं तो मेरे लिए तो वो कुछ वो क्या लिखा है मैं नहीं समझ सकता कभी भी। उसी तरह से जब तक आप ये चीजें नहीं पढ़ोगे, तब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे, सोर्स कोड को आप नहीं पढ़ पाओगे कि सोर्स कोड में क्या लिखा है, क्या कोडिंग है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, वेब programming languages. And as I told you, practice whatever you learn. Like if you are if you have learned SQLi injection, start try to practice in like DVWA or web code, or there are so many, online labs are available, like try hack me. It's it's perfect. It's an amazing online lab to do all this. Also try to read technical write-ups. Almost I think so many researchers, when it comes to bug bounty, they वो अपने blogs पे लिखते रहते हैं, POCs means proof of concepts वगैरह, वो उस पे अपने डालते रहते हैं। उसको हमेशा आप देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। Join some bug bounty communities like such as like HackerOne हो गई, Bug Crowd हो गया, Signac हो गया। So join these communities, interact with other bug bounty hunters. You will learn a lot from them. And join online pen testing labs like try hack me. So here you can, you can penetrate bugs online, then start hunting for bugs and reporting them. And I would suggest that if you want to become a bug bounty or bug hunter, so start from, the websites which are not very famous. Like don't start directly from finding bugs in Microsoft or Google. स्टार्ट फ्रॉम, जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है वेबसाइट्स, उनसे स्टार्ट करिए और रिपोर्ट करिए। बहुत ज्यादा उसमें आप मत पड़िए कि उसको इतने डॉलर्स मिले। तो हमेशा पैसे के पीछे भागने की चीज नहीं होती है। पहले जितना से ज्यादा हो सकती है आप सीखिए चीजों को, उसके बाद once you learn, then obviously you will start earning. And also try to participate in, CTF challenges. I think in India, uh, every month one CTF challenge happens. So try to, participate in CTF challenges. You will learn a lot. So these are some bug bounty platforms from where you can join them, and you will learn a lot from after joining these platforms like Bugcrowd, Signac, and HackerOne, so on. So now talking about BAPT, because if we ask anyone that what do you want to become, either they will say they want to become a bug bounty expert, or they want to become a penetration tester. So first of all, you need to understand that BAPT is a step by step process. VA means vulnerability assessment, and penetration testing is the PT. So there is a difference between VA and PT. ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं। वीए में क्या होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में क्या होता है, इसमें हम स्कैन करते हैं सिस्टम्स को। फॉर एग्जांपल हमें कोई सिस्टम दिया गया कि आप इसका इसका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करो, तो हम उस सिस्टम या उस सॉफ्टवेयर या उस नेटवर्क में जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं हम उसको फाइंड आउट करते हैं, जो भी लूप होल्स हैं हम उसको फाइंड आउट करते हैं, एंड देन वी रिपोर्ट देम that we found these loopholes, these vulnerabilities in your network or in your system.
And in penetration testing, we perform, the real we launch the real world attack, but in a secured manner. हम जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक अटैकर जैसे अटैक करता है किसी सिस्टम पे, हम उसी टाइप से अटैक करके हम उन बग्स को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सिक्योर मैनर में, ताकि वो कहीं से डैमेज ना हो सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डैमेज ना कर सकें। तो इस वे में हम उसको पेनिट्रेट करते हैं, वी पेनिट्रेट द सिस्टम एंड वी ट्राई टू ट्रिगर द vulnerabilities. So these are some steps of VAPT. We can You can say the process of VAPT, like footprinting and information gathering. It is also known as recon. So as you can see, who is lookup, extracting information from DNS, email servers, social engineering. These all, like, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा जिस जिस सिस्टम या जिस सर्वर या कुछ भी आप बोल लो, जिस नेटवर्क पे हम वीएपीटी परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम कितना ज्यादा से ज्यादा, हाँ, ऊपर, हाँ, अरे मैं लाइव हूँ अभी, ऊपर ऊपर, हाँ, सॉरी। सो ऊपर ऊपर ये सब सीढ़ी से जाइए, sorry guys. Then comes the scanning part, where we scan the ports which are open, and pings, vulnerability scanning. It comes. Then comes the exploitation part, where we once we come to know about the vulnerability, we exploit it, like using meta exploit or something like that, password cracking or anything. Then maintaining access. So these are some parts of, like, you can see here, footprinting and information gathering. So this is phase one, as you can see here, when you are doing, footprinting and information gathering. So, like, you are googling, for example, Microsoft. So you will see the result of Microsoft, and you can, this is locating internal, yeah, locating internal URLs. So it is very important to know all the internal URLs exist. uh, yeah, sorry, Google Doc helps a lot, understand how to use Google Doc list, how to, how to, you just Google and you will get everything.